नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे कि बौद्ध धर्म में शांति पाठ कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवायरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको वकालिको एहिपस्सिको उपनयिको पचतं वेदितव्यो वियोनिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकर्ण्यो अनुत्तरं कुह्यन्तेतं लोकस्याति एतेन सत्यवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् अनित्यावत् संखारा उत्पादवैधर्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति ते समोपशमो सुखो अनित्यावत् संखारा उत्पादवैधर्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति ते समोपशमो सुखो अनित्यावत् संखारा उत्पादवैधर्मिनो उपजित्वा निरुध्यन्ति ते समोपशमो सुखो अनेक जातिं संसारं संधाविसंहनिर्दिशं गहकारकं गवेषन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकनिष्ठोऽसि पुनगेहं न कासि सब्बाते फासुका भग्गा गकूटं विशङ्कितं विसंखारगतं चित्तं तणहानं क्षयमज्जगाति अनेक जातिं संसारं संधाविसंहनिर्दिशं गहकारकं गवेषन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकनिष्ठोऽसि पुनगेहं न कासि सब्बाते फासुका भग्गा गकूटं विशङ्कितं विसंखारगतं चित्तं तणहानं क्षयमज्जगाति अनेक जातिं संसारं संधाविसंहनिर्दिशं गहकारकं गवेषन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः गहकारकनिष्ठोऽसि पुनगेहं न कासि सब्बाते फासुका भग्गा गकूटं विशङ्कितं विसंखारगतं चित्तं तणहानं क्षयमज्जगाति सर्वे संखारा अनित्याति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निर्विन्दति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या सर्वे धम्मा अनात्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निर्विन्दति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या सर्वे दुःखा अनात्ताति यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निर्विन्दति दुःखे समग्रो विशुद्ध्या संतदानि भिक्खवे आमन्त्रयामि हो वैधम्मा संखाराय प्रमादेन सम्पादेत हन्तदानि भिक्खवे आमन्त्रयामि हो वैधम्मा संखाराय प्रमादेन सम्पादेत हन्तदानि भिक्खवे आमन्त्रयामि हो वैधम्मा संखाराय प्रमादेन सम्पादेत एतेन सत्यवज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् समन्ताचक्रवालेषु अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो वयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो वयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो वयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
ये संता संत चित्ताति शरण सरला यत्लोकंतरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुण गण गहना व्यावटा सब कालम एते आयन्तु देवा वर्गन कमये मेरुराजीव संतो संतो संतोष हेतुं मुनिवर वचनं श्रोतुमग्रं समग्रा सर्वेषु चक्रवालेषु यथा देवा च ब्रह्मणो यं अम्मे ततं पुण्यं सप्त संपत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य लोकस्य विद्धि भवतु सर्वदा शासनं च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा तद्विमोतु सुखी सर्वे परिवारे यत्तनो अनिघा सुमना होन्तु स सर्वे यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा यमनुष्यतो वा अग्नितो वा रुदकतो वा पिशाचतो वा काणुकतो वा कंटकतो वा नखततो वा जनपदरूपतो वा यशधम्मतो वा असंदिग्धितो वा यशपुरिसतो वा चंडहत्य समिगोड़ कुकुरय विच्छिका मणिसपदीपि अच्युतरच सुकर महिषि अक्षरक्षसा तिहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा यारक्षं गणहन्तु एतेन सत्यवज्रेण शोचिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् यस्सानुभावतो यक्खानेव दस्यन्ति भीषणम् यमिचेवानुयन्तो रतिदेवमतन्तितो सुखं सुखति सुतो च पापं किञ्चित् न पश्यति एवमादिपुरोपेतं परितं तं भवामहे करणीयमस्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत्य सकोजु च सुजु च सुरुचो च समुद्वनतिमानि संतुष्टो च शुभरो च अपकिच्चो च सलहुतोति शान्तेन्द्रियो च निपुतो च अपगपो कुलेषु अननुजितो न च कुतं समाचरे किञ्चिदेन वियोपरे उपदेयो सुखिनो वाक्येनो होन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितः एकेचि पाणभूतस्थितसा वाथावरावानो शेषा दिगावाये महन्ता वा मध्यमा रसकाणुकतूला दिक्खा वा दिक्खाये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितः न परो परं निकुब्रेथनातिमयेत कथज्ञनैकिञ्चि व्यारोसना पटिघसंज्ञानायमय्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ते एवं हि सर्वभूतेषु मानसंभावय परिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावय परिमाणम् उदं अधो च तिर्यं च सम्पादं अवेरं असपतनं पीठं चरं निशिन्नो आशयानो आयावतस्य विगतमित्रो एतं सतिं अदित्येय ब्रह्मेतं विहारन्निदमाहु तिष्ठिं च अनुपगम्यशीलवादस्वनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातुगप्रसेयं पुनरेतीति एतेन सत्यवज्रेण शोचिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् कोटिसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता यशानं पटिगहान्त्यं च सारियं पुरे रोगामनुष्यदुर्भिक्षं सम्भूतं विविधं भयम् क्षिप्रमन्तर्भापेषु परितं तं भरामहे यानि भूतानि समागतानि भौमानि वायानि वयन्तदिक्खे सभ्येव भूतासु मना भवन्तु अतोऽपि सत्कच्च शृण्वन्तु भासितं तस्माहि भूतानि सामेत सभ्ये मृतं करोतमानुष्यापजाय विवाचरतो च हरन्ति एवलिं तस्माहि ने रक्षत्यात्मभक्तां यं किञ्चित्तं विद्वाहुरैवा सर्वेषु वायनरतं परितं न नो समं अर्ति तथागतेन इदं विबुद्धेरतं परितं एतेन सच्चेन सुवक्ति होतु खयं विरागं अमृतं परितं यद्जगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समप्ति किञ्चित् इदं धम्मेन रतं परितं
एतेन सच्चेन सुवति होतु यं बुद्धसेठो परिवर्णयि शुचिं समाधिमानन्तरिक्षयमाहो समाधिनाथेन समुद्रिज्यति इदं धम्मे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु ये पुग्गलायत्तसन्तं पसत्था चत्वारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुकृतस्य साधका एतेषु दिनानि महाफलानि इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु येषु उपयुक्तामनुसाधनेन निकामिनो गौतम शासनं हि ते प्रतिपत्तानिकङ्गिकः लब्धामुदानि पुतिं भुञ्जमाना इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु यस्मिन्दखिलो पठविंसितोऽस्या चतुर्विभागे हि असम्पकम्पियो तथोपमं सपुरुषं वदामि यो सच्चानि अवेत्य पश्यति इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु ये सच्चानि निभावयन्ति गम्भीरपण्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्तु भूसर्पमत्ता न ते भवन् अठमम् आदियन्ति इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु सहावस्य दर्शनसम्पदाय तेषु धम्मार्जयिता भवन्ति सकाय दिट्ठिविचिकित्सितं च शीलबतं वापि यदति किञ्चित् चतुर्भपाये हि च विप्रमुक्तो चाविधानानि अवगन्तुम् इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा चेतसा वा अभवसो तस्य पटिच्छादाय अभवतादिष्टपदस्य उत्ता इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु वरपगुम्बे यथा पुष्पितज्ञे गिमानमासे पठमस्मि मे तथोपमं धम्ममरिणदेशै निर्वाणगामि परमहिताय इदमपि बुद्धेरत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु वरो वरणो वरदोराहारो अनुकरो धम्ममरिणदेशै इदमपि बुद्धेरत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु खेदं पुराणं नवनन्ति सम्भवं विरतचित्ताय बोधवस्मि ते खेदबीजाय छन्दा निभन्ति धीराय धायं प्रदीपो इदमपि संघे रत्नं पठितम् एतेन सच्चेन सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वयान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वयान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वयान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्साम सुवति होतु एतेन सत्यवज्रेण शोचिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् अविद्यापच्या संखारा संखारपच्या विज्ञानपच्या नामरूपं नामरूपपच्या सलायतनं सलायतनपच्या फस्सो फस्सपच्या वेदना वेदनापच्या तणः तणःपच्या उपादानम् उपादानपच्या भवो भवपच्या जाति जातिपच्या जरा मरणं शोकपरिदेव दुःखदो मनस्सुखायासा सम्भवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखं धनस्य समुदयो होति अविद्यायतेव अशेषविरागनिरोधा संहारनिरोधो संहारनिरोधा विज्ञाननिरोधो विज्ञाननिरोधो नामरूपनिरोधा सलायतननिरोधो सलायतननिरोधा हस्तनिरोधो हस्तनिरोधा वेदनानिरोधो वेदनानिरोधा प्रणहानिरोधो प्रणहानिरोधा उपादाननिरोधो उपादाननिरोधा भवनिरोधो भवनिरोधा जातिनिरोधो जातिनिरोधा शोकपरिदेव दुःख
औषधो मनस्सुखायासा निरुध्यन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखसन्धस्य निरोधो होति एतेन सत्यवचेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सत्वरोगो विनश्यतु एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् साधु साधु साधु